Good morning. Today we will talk about the hormone. You all have a very familiar words. Okay, hormone. That is a very well known. You all heard once or in your time about the hormones. Maybe you don't know about the hormones, but you have heard the name hormone. I know about it. Now let's start the hormone. The what is the hormone and how many types of the hormone is present in our body and how they are working, from where they are secreted, from where they are produced, and how diverse action they have. These all things we are going to study in today class. But first, the objectives of the today lectures and the learning outcome. So, to identify the three major classes of hormone on the basis of the chemical structure, that will be the objective of the today's. With include the several components like we can compare to contrast the intracellular and cellular cell membrane hormone receptors, signaling pathway involved in the cyclic AMP and IP3, several factors that will influencing the target receptors and the hormones, the role of feedback and loop, humoral, hormonal, and neural stimuli in hormonal control. And after studying this chapter, the outcome will be like you can identify the major classes of the hormone. You can understand the mechanism of hormone, that is the hormone action, from where the hormone is secreted, from which parts of the brain is responsible to secrete the different types of the hormone. You can understand it. Now come to the point: hormones. A hormone is a mediator molecule that is released in one part of the body but regulate the activity of cell in other parts of the body. Okay, so hormone is a mediator molecules. Hormone क्या है? Hormone एक mediator molecules है that is released in one part of the body but regulate the activity of cell in other part of the body. So those molecules that is released from this one cell and acting on a different cell. रिलीज तो हो रहे हैं एक सेल से, लेकिन एक्ट कहाँ करते हैं? दूसरों सेल्स पे करते हैं. And most of the hormones enter the interstitial fluid and then the blood stream. Okay, now the circulating blood deliver the hormone to cell throughout the body. जो circulating bloods की बात करें, it will deliver the hormones to the different cell present inside the body. And the both the neurotransmitter and the hormone exert their effect by binding to the receptor or in the target cell. Both neurotransmitter and hormone can exert their effect by binding to the receptors. And several mediators are act as a both neurotransmitter and hormone. Okay, so we can also say hormone is a potent biological active molecule. Hormone is a potent biological active molecule. It is also a mediator molecule that is released from the cells and then regulates cellular activity. Now, body contains the two kinds of the glands. हमारे बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन. एक्सो मीन्स आउटसाइड और क्राइन मीन्स सिक्रीशन. So the exocrine glands secrete their product into the duct that carry the secretion into the body cavity. So exocrine glands वो ग्लैंड होती है जो secrete करती है अपने प्रोडक्ट्स को एक डक्ट के थ्रू, ओके, एक ट्यूब्स के थ्रू, and that will carry these secreted substances into the some cavities like into the uh, lumens of an organ or to the surface of the bodies. For example, pseudoriferous gland जो will secrete the sweat secrete करती है, sebaceous gland oil secreting, mucus and digestive glands. Second gland will be the endocrine gland. Endo means within or inside. So these will secrete their product directly into the cells.
You can see directly into the interstitial fluid surrounding the secretory cells rather than into the duct. ये duct less gland होती है. And from the interstitial fluid, hormone diffuse into blood capillaries and blood carries them to the cell targets throughout the body, because most hormones are required in very small amounts and circulating level typically are low. Now, difference between the endocrine and exocrine is that exocrine glands में डक्ट होते हैं, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होते हैं. सो अगर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में अगर डक्ट है तो दे विल सिक्रेटेड द सिक्रीशन टू अ पर्टिकुलर एरिया, टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, वी हैव डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स लाइक द मैंडिबल, mandibular gland, sublingual gland, parotid gland. Parotid gland will secrete their product through the parotid ducts. Mandibular gland will secrete their product through the mandibular duct. So these ducts are secreted their secretion into the oral cavity. Another example देखिए, pancreas. Pancreas having a duct, pancreatic duct, that will secrete it into the secretion into the duodenum. सिक्रीशन तो पेनक्रियास के अंदर हो रहा है, प्रोडक्शन पेनक्रियास के अंदर हो रहा है हार्मोन्स का, लेकिन डक्ट के थ्रू वो काम कहाँ कर रहा है, इंटेस्टाइन्स में आके. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. एंडोक्राइन सिक्रीशन की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, cells will secrete the hormones into the interstitial fluid and from there it will diffuses into the blood. वहाँ से ब्लड में जाएंगे और फिर ब्लड से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे एंड टारगेट करेंगे सेल्स को. And it is also required in a very small amount. So hormone is a Greek word that means to execute or to arouse. So the secretory product of the ductless glands which are released in the catalytic amount in the bloodstream. So hormone is a secretory product of a ductless gland. जो ductless gland है मतलब endocrine secretion जो हो रहे हैं जो रिलीज किए जाएंगे इन अ कैटालिटिक अमाउंट में, उतने ही अमाउंट में रिलीज किए जाएंगे जो किसी रिएक्शन को इनहांस कर सके, कैटलाइज कर सके. ओके, एंड ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करे टू द स्पेसिफिक टारगेट सेल, स्पेसिफिक टारगेट सेल तक ट्रांसपोर्ट करे वेयर दे कैन एलिसिट देयर फिजियोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, जहां पे वो अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, मार्फोलॉजिकल को और बायोकेमिकल रिस्पांस को दिखा सके. टाइप ऑफ हार्मोन्स की बात करें, फंक्शनल या action according to function, according to action. So there are the four type of the hormones you can see: the endocrine hormones, paracrine hormones, autocrine hormones, and neurocrine hormones. Endocrine hormones that will travel through the blood to act as a site distance from the secreting cell or gland. That means one cell is secreting the hormones, then these hormone is going into the bloodstream, and through the bloodstream, through the blood circulation, it will be goes at the different cell. That is the endocrine hormone. ये हो रहा है endocrine में. पैराक्राइन हार्मोन, पैरा मीन्स नियर बाई, आसपास की जो सेल्स होती हैं उसको पैरा सेल्स बोल सकते हो. सो पैराक्राइन हार्मोन्स मीन it will act on the cell near the secreting cell. That means the cell will secrete the hormones and these hormones are acting on the nearby cell. It is called the paracrine hormones. ऑटोक्राइन हार्मोन की जो खासियत है उसमें सेल जब हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे तो ये हार्मोन उसी सेल पे एक्ट करते हैं जो सेल से सिक्रीट कर रही होती है. That is called autocrine. Auto means self, crine means secretion, self secretion. So self secreting agent will work on the same cell. That is called the autocrine hormones. Another is the neurocrine hormone, and neurocrine hormone that will secreted by the neural cell, like the neurotransmitters or neurohormone. So you have seen the four types of the hormone here. Endocrine hormones जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है ब्लड स्ट्रीम में, पैराक्राइन हार्मोन्स जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है और एक्ट कर रहा है नियर बाई सेल्स पे, नेवर सेल्स पे. ऑटोक्राइन हार्मोन्स जो हार्मोन सिक्रीट तो कर रहे हैं सेल्स लेकिन वो हार्मोन उन्हीं पे काम कर रहा है, और न्यूरोक्राइन सिक्रीशंस दैट विल द न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरो हार्मोन्स. नाउ यू कैन सी दीज आर द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम्स. सिग्नलिंग मैकेनिज्म की बात करें तो एंडोक्राइन विल बी ऑलवेज एक्ट केमिकल, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हो रहा है, हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है.
केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। सो द सिग्नलिंग मैकेनिज्म इज केमिकल, जबकि नर्वस सिस्टम में क्या है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों हो सकते हैं। I told you, in the nervous system chapter, that will two type of the things by which they can transmit the signals. One is the by neurotransmitter, one is the chemical. Okay, electrical and chemical, electrical impulses and the neurotransmitter. So these are the things. प्राइमरी केमिकल सिग्नल्स की बात करें तो एंडोक्राइन में हार्मोन्स होंगे और नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल की बात की जाए तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, बट नर्वस सिस्टम ऑलवेज शॉर्ट। रिस्पॉन्स टाइम एंडोक्राइन का फास्ट और स्लो दोनों हो सकते हैं, बट नर्वस सिस्टम विल बी ऑलवेज फास्ट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वी नो द हाउ मच फास्ट इम्पल्स कैन बी ट्रेवल्ड। इन्वायरमेंटल टारगेट की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में ऑलवेज इंटरनल इन्वायरमेंट होंगे, while in the nervous system internal external both. You can see there is some situation of the pineal glands, hypothalamus, pituitary gland, thyroid glands, parathyroid glands. Okay, so these are the things. Thymus gland, adrenal glands, pituitary glands, pineal glands, thyroid glands, parathyroid glands, and pancreas, ovary, testes. Now, what is the function of the hormones? So, hormone will help to regulate like the chemical composition and volume of internal environment. उनको हेल्प करेंगे, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर में हेल्प करते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, इम्यून सिस्टम एक्टिविटीज़ में हेल्प करेंगे, कंट्रोल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, रेगुलेट ऑपरेशनल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे, हेल्प हेल्प स्टैब्लिश एंड सर्केडियन रिदम में काम करेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन से अगर हम बात करें कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स कंसिस्ट, हार्मोन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। सो हार्मोन्स विल बी अ लो मॉलिक्यूलर वेट, हार्मोन हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट, सो इट कैन बी इजीली पास आउट थ्रू द कैपिलरीज। हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है जिसके कारण ये इजीली कैपिलरीज को पास करके फिल्ट्रेट हो जाते हैं या परमिएबल रहते हैं। It is soluble in water, so hormone can be easily transported with the bloodstream. Hormone are powered into the venous blood. Whenever their function is over, hormones are readily destroyed or inactivated or exerted. जब कभी भी हार्मोन का फंक्शन ओवर हो जाता है तो ये अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इट विल नॉट पुट प्रेजेंट इन द बॉडी अननेसेसरीली। इट इज नॉन एंटीजेनिक होते हैं। इट विल नॉट produce any type of the infection, or it is not act as like a microorganism. It is organic catalyst की property होते हैं। It will enhance the reaction as a coenzyme of the other enzyme in the body, and it always act in a very low concentration. And many hormones will produce in inactive form that will be called the prohormones. A hormone in its primary action affect one or a limited number of reaction and does not influence directly all other metabolic activity of the cell. जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात करें, that will trigger the all the cell activity, but the hormone is primary action that will affect only to the target area and the limited number of the reaction. It does not influence, it does not put in the action to the whole cell, or it will not put any changes in the metabolic activity of all the cell. So hormones दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, इनको जो काम टारगेट दिया जाता है सिर्फ उतना ही करेंगे। Secretion of hormone is provoked in response to the given situation, and it will fulfill a given task. Now, हार्मोन के सिक्रेशन की जब अगर बात करें हम, द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन इज प्रोवोक्ड in response to a given situation, and its action is therefore to fulfill the given task. When there's any stimulation is there,
then the secretion of hormone is can be provoked for particular situation, and it will fulfill their task. So hormonal activity is not related to the hereditary. It is not a genetic, and hormones are produced by the specialized gland are secreted directly into the bloodstream. So we know the hormones are produced by the different specialized glands like the endocrine glands, paracrine, autocrine, neurocrine, and they are secreted directly into the bloodstream. Hormones are required in very small amount, and their effect may be excitatory or inhibitory depending upon their concentration and the physiological state of the responding tissue. So hormones will always required in very small amount, and their effect can be excitatory or inhibitory. That means hormone या तो excitatory होंगे या तो inhibitory होंगे, and it will depend upon the how much amount of the hormone is produced and which type of the hormone is this. So it could be excitatory, या तो ये रिएक्शन को सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, या इनहिबिटरी होंगे, या तो उसके एक्शन को इनहिबिट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे. So these are the property. Now these are the different, you can say, classification of the hormones. So first one is the pituitary gland. Now pituitary gland is the anterior and posterior. So anterior part, that is the front side, and posterior part, that is the rear side. So you can see in anterior pituitary gland and posterior pituitary gland. From anterior pituitary gland, the growth hormone will be released, like the prolactin hormones. Adrenocorticotropic hormone is there, like the corticotropins. Thyroid stimulating hormone, like thyrotropin, yeah, TSH. Gonadotropins, like follicle stimulating hormone, FSH, and luteinizing hormone, LH. सेकेंड जो ग्लैंड्स है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट्स होंगे. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टीरियर से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं. वन इज द ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड इज द एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, या इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. ओके, सो कीप फोकस. Anterior glands is release several hormones by their anterior pituitary and posterior pituitary parts. From anterior side से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेंगी, adrenocorticotropic hormones, thyroid stimulating hormones, follicle stimulating hormone, and luteinizing hormone. और posterior से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. फिर दूसरा ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड्स. Thyroid glands will release three types of the hormone, that will be T3, T4, and calcitonin. Like thyroxine is there, T4 is there, T3 tetrahydrothyrronine is there, and calcitonin is there. So T3, T4, and calcitonin will be released from the thyroid glands. T4 is also called the tetrahydrothyrronines. तीसरी जो ग्लैंड है हमारी वो है पैराथायराइड ग्लैंड्स. पैराथायराइड ग्लैंड्स विल रिलीज द पैराथॉर्मोन्स. फोर्थ है हमारा पैनक्रियाज. Pancreas will release the insulin and glucagon from the isolate of Langerhans cells. Okay, and another we have the adrenal glands. Like पांचवा जो हमारे है वो adrenal glands है. और adrenal will release the cortex और medulla, दोनों से release होते हैं. Cortex will release the glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex steroid. Glucocorticoids में hydrocortisone, mineralocorticoids aldosterone, and the sex steroid dehydroepiandrosterone. Okay, and medulla say adrenaline and noradrenaline. Then gonads will be there. From the gonads it will be released androgen, estrogen, and progestin. Androgens में आप देखेंगे तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन में एस्ट्राडायोल, एंड प्रोजेस्टिन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होंगे. So let's see once how many types of the hormones are secreted by the, and how many types of the gland is there. So the first one was the pituitary gland, and pituitary having the two parts, anterior and posterior. Anterior pituitary gland will secrete the growth hormone prolactin, adrenocorticotropic hormones, adrenocorticotropic hormone ECTH, corticotropin. Then you will see thyroid stimulating hormone thyrotropin, and follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. These all will secrete by the anterior part, anterior pituitary gland. Posterior pituitary gland will secrete the oxytocin, and another is the vasopressin, antidiuretic hormone ADH. Second was gland is the thyroid gland. Thyroid gland will secrete the T3, T4, and calcitonin. T3 is a tetrahydrothyrronine,
T4 is a triiodothyronine. Sorry, T4 is a tetraiodothyronine or thyroxine, while T3 is a triiodothyronine, or third one is a calcitonin. Third is the parathyroid. Parathyroid will release parathormone. Then pancreas. Pancreas will release the insulin and glucagon from the islet of Langerhans. Then adrenal glands. Adrenal glands having the two parts, cortex and medulla. From medulla, it will release the adrenaline and noradrenaline. From cortex, it will be released the glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex steroid. Glucocorticoids में हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स स्टेरॉइड में डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन. तो आपको याद होगा, आई टोल्ड यू अबाउट द वर्ड एल्डोस्टेरोन. So aldosterone will be released from the adrenal cortex area, okay, and the gonads, that will be androgen, estrogen, and progestins. Now you can see here there is the chemical classes of the some lipid soluble hormone is there, and the site of secretion is there. Like steroid hormone की अगर बात करें हम, aldosterone is there. So aldosterone, cortisol, androgen, calcitriol, testosterone, estrogen, and progesterone. These are all the hormones. Like aldosterone, cortisol, and androgen secreted from adrenal cortex, calcitriol from kidney, testosterone from testes, and estrogen progesterone from the ovaries. थायराइड हार्मोन्स की बात करें, इसमें T3 और T4 होंगे जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट करेंगे. गैसेस की बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड्स की बात करें, एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स से सीक्रेट होंगे. अमाइंस की बात करें, जिसमें इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन होंगे, दैट इज कॉल्ड द कैटेकोलामीन्स. epinephrine and norepinephrine, that means adrenaline and noradrenaline. Now these will be released from the adrenal medulla. Melatonin from pineal gland. Pineal gland is the gland that will be released the melatonin. Histamine, mast cell, serotonin, platelets in the blood, all hypothalamic releasing and inhibiting hormone from the hypothalamus. So the releasing hormones and inhibiting hormone will be released from the hypothalamus. Oxytocin and antidiuretic hormone like the posterior pituitary, human growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactin, melanocyte stimulating hormone will be secreted from the anterior pituitary gland. Insulin, glucagon, somatostatin, pancreatic polypeptide from pancreas, parathyroid hormone by the parathyroid glands, calcitonin by the thyroid glands or parafollicular cells, gastrin, secretin, cholecystokinin, GIP, that is the glucose-dependent insulinotropic peptides, will be secreted from the stomach and small intestine, enteroendocrine cells, erythropoietin by the kidney, leptin by the adipose tissue, prostaglandin and leukotrienes, that is the eicosanoids. It will be released by the all cell except the RBC. So prostaglandin and leukotrienes, it will be secreted from the all cells can be secreted except the red blood cells. Now here you can see the mechanism of action of the lipid soluble steroid hormone and thyroid hormone. जो lipid soluble hormones हैं, hormone are the lipid soluble, so that is the reason it can be easily goes carried through the bloodstream. So these you can see these are the lipid soluble steroid hormones and thyroid hormone. So lipid soluble hormones bind to the receptor inside the target cell. From blood capillaries will bind, transport protein will help in this process. So you can see the serial number 1, that is the lipid soluble hormone diffuses into the cell. So the free hormones hai, it will be goes into the cells, and in the cell you can see it will activate the receptor hormone complex altered gene expression. उनको activate कर देते हैं by binding with the hormones, and when it will be binds, then the newly formed mRNA direct synthesis of the specific proteins on a ribosome will be started. Like the hormone is going to inside the cell. Inside the cell, there is a nucleus which have the receptor, complex altered gene expression. Then it will activated by the hormone. Then the DNA will be formed. Then mRNA will be formed. Then ribosomes will goes there, and then formation of the newly formed mRNA direct synthesis. A new protein will be formed, and the new protein alter the cell's activity. और जैसे नया प्रोटीन बनेगा, ये सेल की एक्टिविटी को क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे. So that is the mechanism. Now water soluble hormones, how it will work.
Mol- Now, mechanism of action की बात करें, if we are talking about the water soluble drug hormones, how the water soluble hormones like amines, peptides, protein and eicosanoids, ये सारे water solubles हैं, ये कैसे act करेंगे? So water soluble hormones bind to the receptor embedded in the plasma membrane of targeted cell. You can see the serial number one, binding of hormone to its receptor activated G proteins, which activate the adenolate cyclase. Now, adenolate cyclase will activate it. When these hormones are goes and bind with the receptor, a G protein coupled receptor that will present on the cell membrane. So, water soluble hormone are bind with this receptor. Now, this receptor is going to activate the adenyl cyclase. That means then it will activate the adenyl cyclase and convert the ATP to cyclic AMP. So जो ATP है वो convert हो जाएगा cyclic AMP में. Now this cyclic AMP serve as a second messenger to activate the protein kinase. Now cyclic AMP will be called the second messenger. So this second messenger will activate the protein kinase system. So it will now activate in the protein kinases. Now this activation of protein kinase phosphorylate the cellular proteins. ये phosphorylate खास करेंगे cellular proteins में, and then you can see the million of the phosphorylated proteins causes the reaction that produce the physiological response. So this phosphorylation will produces the physiological response. Either you can say the phosphodiesterase will be inactivated. Phosphodiesterase is the enzyme which inactivates the cyclic AMP. So if the cyclic AMP is going to inactivate it, then the phosphorylation will not be possible. And if the phosphorylation will be not possible, then the cellular and physiological response will be not possible. So these are the mechanism of action of the water soluble hormones. Now we have some quiz section is here. Like you can see, which statement below the hormone is true? Which statement below the hormone is true? कौन से statement है जो सही है? A, hormone are enzymes that catalyze the reaction. Hormone or enzyme both are the different things. Hormone is a potent biological active molecules while enzyme is a biocatalyst of life. So these are the not correct answer. Hormone are released into the blood circulation. Yes, it is correct. Hormone affect all cells of the body? No. Hormone will not affect the all cells of the body. Even the hormone will not affect the all the cellular activity. It is also incorrect. Hormone are released by the neurons at synapses. It is also incorrect. So answer B is appropriate. And answer B is correct. Hormone are released into the blood circulation. Which hormone are soluble in blood? कौन से हार्मोन ब्लड में soluble है? Steroid hormone, hormone produced by the adrenal cortex, sex hormone, those released by the pituitary gland. So answer D are the soluble in the blood. So those released by the pituitary gland, like जो भी pituitary gland से हार्मोन निकल रहे हैं, that is the soluble in the blood. So which hormone are soluble in the blood? Like growth hormone, prolactin, adrenocorticotropic hormone, ACTH, corticotropin, thyroid stimulating hormone, thyrotropin, TSH, and follicle stimulating hormone, FSH, luteinizing hormone, LH. These hormones are the soluble in the blood. Another question: which statement about the hypothalamus is correct? Hypothalamus के बारे में कौन सा statement सही है? The hypothalamus is connected to the brain by the infundibulum. The hypothalamus is connected to the brain by infundibulum. The hypothalamus is composed of glandular epithelial tissue. The hypothalamus secretes the releasing hormone. The hypothalamus secretes the epinephrine or epinephrine. We know the epinephrine or epinephrine is secreted by the adrenal medulla. Hypothalamus will secrete the releasing hormone and inhibiting hormone. So yes, answer C is correct. What hormone does the thyroid produce? Thyroid कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? You can see what hormone does the thyroid produce. A, thyroid stimulating hormone. B, calcitriol. C, thyroxine. D, parathyroid hormone. What hormone does the thyroid produce? Thyroid will produce three types of the hormone: T3, triiodothyronine, T4, thyroxine, and calcitonin. So here answer C is correct.
What hormones does the adrenal medulla produce? As earlier slides I told you, adrenal medulla and cortex, two part is there. Medulla produce the epinephrine and norepinephrine. So answer B is correct. Aldosterone, corticosteroid, glucocorticoids, these are not produced by the medulla, these are produced by the corticosteroid. Also, these are produced by the cortex part. What is produced by the beta cell of the pancreas? Now we know in the pancreas there is a different type of the cells. Angiotensin converting enzyme ACE, glucocorticoids, glucagon, and insulin. So we know the beta cell will produce the insulin. Answer D is correct. Which gland or organ release the erythropoietin? Which gland or organ release erythropoietin? Kidney is there. Adrenal glands will not. Anterior pituitary will be not. Pancreas will be not. So yes, answer A is kidney. What effect does the parathyroid hormone have? Parathyroid hormones कौन सा affects करता है? It increase the plasma calcium concentration or decrease the plasma calcium concentration, increase the rate of ATP formation, stimulate the thyroid glands to produce the thyroxine. Yes, answer A. It increase the plasma calcium concentration is correct. Which one of the following is not a part of the endocrine system? अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा which one of the following is not a part of the endocrine system. Isolate of Langerhans, it is endocrine, correct. Thyroid gland is also endocrine. SNE cell of the pancreas, it is not endocrine, it is a exocrine cell that will release the pancreatic juice and it will go through the pancreatic duct into the intestine. So answer C is correct here. What is the difference between an exocrine gland and endocrine gland? दोनों में क्या difference है between exocrine gland और endocrine में? You will see. We already know that. Endocrine is a ductless gland, while exocrine is a ductal gland. So an endocrine gland secrete neurotransmitter, wrong. An endocrine gland secretes via tubules, wrong. An exocrine gland secrete into the blood, incorrect. An endocrine gland secretes into blood, correct. So answer D is correct. So these are all the questions we have seen. Now let me come and once again just let me classify once again the recap, little recap. Like we have seen anterior gland, that means anterior pituitary gland, release growth hormone, prolactin, ACTH, corticotropin, TSH, thyrotropin, and FSH, gonadotropins like the FSH and LH. So these gonadotropins having the follicle stimulating hormone and luteinizing stimulating hormone. पोस्टीरियर की बात करें तो ऑक्सीटोसिन है और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स लाइक वैसोप्रेसिन है. थायराइड ग्लैंड्स की बात करें तो थायरोट्रॉक्सिन, थायरोक्सिन, ट्राइआडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन. फिर हम पैराथायराइड ग्लैंड्स की बात करें, पैराथॉर्मोन. पैनक्रियास की बात करें, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट होते हैं. एड्रिनल की बात करें जिसमें कॉर्टेक्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड और गोनाड्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. इसके बाद फिर से हम एक बार एक्शंस की तरफ ध्यान से देखेंगे. तो वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हार्मोन, दैट इज द वाटर सॉल्युबल हार्मोन एंड द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. एक तरफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, एक तरफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है. हाउ बोथ आर एक्टिंग? So lipid soluble like the steroid hormone and the thyroid hormone की अगर हम बात करें, how it is lipid soluble hormone, how it is going to act? So there is a transport protein present inside the blood capillaries who transport these hormone to the cells. We know blood goes, the hormones go into the bloodstream. Through the blood, it will go to the targeted cell. So these transport protein present in the blood will carry the hormones towards the cell. तो जैसे ही ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर डिफ्यूज करते हैं, it will be goes and bind with these particular receptor hormone complex alter gene expression से बाइंड होते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं. सो जैसे वो रिसेप्टर से बाइंड होंगे, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे, then what will happen? The new formed mRNA
एक नई mRNA का डेवलपमेंट होगा। From DNA formed a new mRNA and this new mRNA direct the synthesis of specific protein, एक नई प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। और जब ये प्रोटीन बनेगा, दिस प्रोटीन विल अल्टर द सेल्स एक्टिविटी, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द lipid soluble or you can say the lipophilic hormone. Then what will be the हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग हार्मोन्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, लाइक अमाइंस, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, यूकोसानाइड्स. So in these cases, the hormones which are running inside the blood capillaries are first binding with the cell membrane receptor, that is called the G protein coupled receptor, GPCR. And by binding this water soluble hormone to the receptor, they are going to activate the GPCR by converting the by activating the adenyl cyclase. Okay, so जैसे ही हार्मोन्स GPCR से बाइंड होते हैं, they activate the receptor. Now this activation is causes the activation of adenylate cyclase. Adenyl cyclate का activation होता है. Now this adenyl cyclate activation will convert the ATP to cyclic AMP. Okay, जैसे ही एडेनाइल साइक्लेट एक्टिवेट हुआ, ये कन्वर्ट कर देगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में. ओके, सो दैट विल बी, यू कैन सी दिस साइक्लिक एएमपी. अब ये जो साइक्लिक एएमपी बना है, दिस साइक्लिक एएमपी सर्व एज अ सेकेंड मैसेंजर टू एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज. अब इस साइक्लिक एएमपी जो होते हैं, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज बना देते हैं. अभी तक क्या था, बस साइक्लिक एएमपी बना. कैसे बना? भाई जस्ट एक्टिवेशन ऑफ द एडेनाइल साइक्लेज. हार्मोन आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एंड बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, which receptor? G protein coupled receptor, GPCR. It activated the adenyl cyclase enzyme. So this cyclase activation will convert the ATP to cyclic AMP. जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट थे, उसको कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में. और ये साइक्लिक एएमपी विल हियर एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर का काम करता है. और बाय एक्टिंग द सेकंड मैसेंजर, इट विल एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज. जो प्रोटीन काइनेज अभी तक शांत था, अब उसे इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है. ओके, नाउ दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज will causes the phosphorylate of the cellular proteins. So phosphorylation will be start here. Now there is the addition of the phosphate group in the proteins. A protein में phosphate group का जुड़ना. Now this will causes to produce the physiological response. So millions of the phosphorylated proteins causes the reaction that produces the physiological response. Now the cells will start their activity. Now cellular activity will be start. So these are the process. Okay, so सबसे पहले हार्मोन्स ब्लड से ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ. रिसेप्टर से बाइंड होके ये रिसेप्टर को एक्टिवेट किया. रिसेप्टर को जैसे ही एक्टिवेट किया, इसने एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ. एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो ये कन्वर्ट कर देगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में. साइक्लिक एएमपी इज अ सेकंड मैसेंजर, इसको सेकंड मैसेंजर बोलते हैं. और जैसे साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा, इट विल causes the activation of protein kinase to एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज में. तो इसने क्या किया, तुरंत प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया. और प्रोटीन काइनेज जैसे ही एक्टिवेट हो गया, ये फास्फोराइलेशन स्टार्ट कर देगा. ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा प्रोटीन्स में, और प्रोटीन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सेल्स की इंक्रीज कर देगा. नाउ देयर इज अनदर एंजाइम that will be called the phosphodiesterase. This phosphodiesterase enzyme will inactivate the cyclic AMP. और अगर cyclic AMP को inactivate कर दिया गया है, जो कि secondary messenger है, तो protein kinase will not be activated. प्रोटीन काइनेज एक्टिवेटेड नहीं होगा तो फास्फोराइलेशन नहीं होगा, डीफॉस्फोराइलेशन विल स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स विल बी स्टॉप्ड. So here these are the interesting questions. We have already goes through these questions. Now you can see these are the things, like I already tell you the difference between the exocrine gland and endocrine glands. Okay, endocrine gland, endo means within, or you can say inside, and crine means secretion, so inside secretion. So endocrine are the those secretion that is a ductless secretion. That means they produce the hormones without the duct. Just
cell produce the hormones. The hormone goes into the interstitial fluid, and from interstitial fluid, this hormone goes into the bloodstream. While the exocrine will secrete their hormones through the duct in a proper cavity of the particular region of the body. So, endocrine glands will not secrete the neurotransmitter. Endocrine glands secrete what tubular to the gestation is also incorrect. Exocrine glands secrete into the blood. It is exocrine glands secrete into the blood. It is also incorrect. And endocrine glands secrete into the blood. That what is the correct answer. And we know why the pancreas. One amazing fact is pancreas. Pancreas having the both property. It is an endocrine gland or exocrine gland. Both are both. How is it possible? We know pancreas is composed of the Acini cells. Pancreas में दो तरह की cells हैं. One is the Acini cell और another is the Langerhans या isolate of Langerhans. Pancreatic isolates भी जिनको आप बोलते हैं या isolate of Langerhans भी बोलते हैं. 99% of the pancreas are composed with the Acini cell. सिर्फ 1% है जो pancreatic isolate से बनी है. Okay. 99% cells is composed of the Acini. Acini are the those cell which will release the pancreatic juice. Acini कौन सा सेल है? वो सेल है जो pancreatic juice को रिलीज कर रही है. Pancreatic juice goes into the because these acids of the pancreas will release the pancreatic juice, and the pancreatic juice will goes into the pancreatic duct, and from the pancreatic duct it will be powered into the small intestine duodenum. So you know it is which type of secretion? Exocrine secretion है जिसमें सेल सिक्रीट कर रही है लेकिन सिक्रीशन डक्ट के थ्रू आ रहा है. दूसरी तरफ इसी में एक सेल है जिसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस और पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रेट कर रही है, एंड दीज सेल्स आर सिक्रेटिंग द इंसुलिन, and then insulins are targeted, goes into the bloodstream. Okay, targeted to the cell. So these are the endocrine secretion. So we have seen the difference of the endocrine secretion, exocrine secretion. Another secretion is the paracrine and autocrine. Para means nearby. So when the cell will secrete the hormones, these hormones will act on the nearby cells. Autocrine secretion, autocrine hormones, when the hormone will secrete, the cells will secrete the hormone. These hormones are act on the self cell which secreted the hormones, autocrine secretion. So these are the wonderful things about the hormones. Now these are the reference. You can go through these reference, and you can read well about the hormones. We will meet again in the next classes with some new interesting facts about the hormones. Till then, thank you for the today class.